बच्चों, so let's read this question. Phenols do not react with one of the following: A. Alkali metals, B. Sodium hydroxide, C. Potassium hydroxide, and D. Sodium bicarbonate. Now let us see the key concept of the question. जो हमारे phenols होते हैं, they are weakly acidic. So phenols are weakly acidic. Whereas जो हमारे bicarbonates होते हैं, bicarbonates ions are not strong enough to take the H plus ions from phenols. जो हमारे बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं वो भी इतने स्ट्रांग नहीं होते टू टेक H plus ions from phenols, और जो हमारे phenols होते हैं they are also weak acids, so from phenols. Now let us discuss the options one by one. A हमें दे रखा है फिनॉल का रिएक्शन अल्कली मेटल के साथ अगर हम कराएं तो कोई प्रोडक्ट फॉर्म होगा या नहीं होगा. तो फिनॉल्स विद अल्कली मेटल्स, तो अगर हम अल्कली मेटल्स के साथ करें तो हमारे अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स होते हैं. सो अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स react with active metals such as sodium, potassium, and aluminium to yield corresponding alkoxides or phenoxides and hydrogen. To yield corresponding alkoxides or phenoxides and hydrogen. तो अगर हम इनका जनरलाइज्ड रिएक्शन देखें तो हमारा रिएक्शन हो जाएगा 2 moles of alcohol or phenol whatever plus 2Na gives 2RONA plus H2. So this is sodium alkoxide. Sodium alkoxide. तो हमारा फेनॉल तो रिएक्ट कर रहा है अल्कली मेटल्स के साथ, तो हमारा ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाएगा. नाउ लेट अस टॉक अबाउट ऑप्शन बी व्हिच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. सो बी फेनॉल्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें या फिर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो हम ऑप्शन सी और बी एक साथ ले लेते हैं, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, because they are both in the same reactivity range, potassium or sodium hydroxide. Now let us talk about the reaction which is involved. So the phenols react with sodium or potassium hydroxide to form sodium or potassium phenoxides. To form sodium or potassium phenoxides. तो अगर हम इसका भी जनरलाइज्ड रिएक्शन देखना चाहें, we will take an example with sodium hydroxide. अगर हम इसका generalized example देखें तो it will form, ये हमारा फिनॉल हो गया, this is our phenol plus NaOH which is sodium hydroxide will give sodium phenoxide which will look somewhat like this, ONA plus H2. और अगर हम सेम रिएक्शन अपना KOH which is potassium hydroxide के साथ देखें तो this will be the reaction phenol plus KOH
will give potassium phenoxide, which is OK plus H2O. तो अगर हम कंपाउंड्स का नाम लिखना चाहें तो हमारा पहला कंपाउंड हो गया फिनॉल है, ये फिनॉल है हमारा, दिस इज आवर फिनॉल, which on addition with sodium hydroxide or potassium hydroxide gives ONA, which is our sodium phenoxide or potassium phenoxide and water. तो हमारा सोडियम और उसके साथ भी और सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी हमारा जो है फेनॉल रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा हमारा करेक्ट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें, डी इज सोडियम बाइकार्बोनेट, हमने ये चीज की कॉन्सेप्ट में भी डिस्कस की थी। जो हमारा फिनॉल होता है वो वीक एसिड्स होते हैं और जो हमारे बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो भी इतने स्ट्रांग नहीं होते कि वो H प्लस आयंस फिनॉल से निकाल सकें। सो सोडियम बाइकार्बोनेट phenols are weakly acidic and bicarbonates are not strong enough to take the H plus ion from phenols. Hence, it behaves differently from other acids in that it does not react with sodium bicarbonate. It does not react with sodium bicarbonate, which is NaHCO3. तो हमारा आंसर हो गया फाइनल सोडियम बाइकार्बोनेट. Option number D will be the correct answer to the question. I hope you understood the question well. Best of luck.